Good evening, students. I am your English teacher. I am here to teach you English. You know English. You like to learn English. I like the language. ऐसे कहेंगे क्या हम English? Of course not. So, today I am your English teacher from Motion Foundation, Seema Ma'am, for you just to explain you some facts about English, our basic English and advanced English. तो पहले advanced English जानने से पहले जानते हैं English के बारे में, right? Is it necessary to always speak in English? Of course not. It is also a language. जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे आप English भी सीखेंगे. Exactly. अब बात आती है हमारे लैंग्वेज के कमांड की. हाउ आर वी स्पीकिंग एंड हाउ आर वी कॉम्प्रिहेंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज. कैसे समझते हैं हम इसे और कैसे बोलचाल में लेते हैं. I've seen a lot of kids finding very difficult to speak in English just because they are not confident, just because they are not thorough with the vocabulary. Doesn't matter. भाषा ही तो है, सीखेंगे और बिल्कुल सीख जाएंगे. मोशन के साथ रहेंगे तो ज़रूर सीखेंगे. So, not wasting much of our time, we'll start with this session. Yes, do you speak English? It's a question to everybody. Do you speak English? Of course, I know all of my students sending your comments. Yes, Mirza Ishan, hello. Ujjwal, hello beta. And I of course know my students can speak good English. Okay. So first of all, आपको पता है इंग्लिश की वैल्यू क्या है आज की डेट में. ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू सम कॉर्पोरेट्स, सबसे पहले आपके रिज्यूमे के साथ ये देखा जाता है आर यू फ्लुएंट विद द लैंग्वेज और नॉट, राइट. कहीं पे भी आप जाएंगे सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके रिज्यूमे में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या मांगी जाती है, दैट आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, डू यू नो द लैंग्वेज, will you be able to communicate with others in this language particularly. Why? Because today's time is a globalization time, right? आज हम borders के बाहर दूसरी countries के साथ business कर रहे हैं. It is a time of technology, time of globalization. How would we survive learning only one language? Not possible. That's why we are learning English. English, why English only? Because it's a language, it's an official language of 53 countries. आप समझते हैं 53 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज होना कितनी बड़ी बात है. दैट मीन्स आप इंडिया के बाहर जाते हैं, इंडिया में तो आप देखते हैं अगर आप इंडिया के बाहर ओवरसीज़ पे भी जाएंगे तो यू विल फाइंड any other person speaking his own or her own language, native language along with English. Out of 100 you would find 60 to 70 people speaking in English other than their native language. तो हमें भी हिंदी आती है और भारत माता की जय. हिंदी तो हमेशा अजय अमर है ही सही, पर हमें इंग्लिश भी सीखनी है. So coming to the importance of English, yes, it's a medium of communication in other countries. Obviously जैसे कि मैंने आपको कहा, आप कम्युनिकेट करेंगे. हाउ यू विल कम्युनिकेट इफ एंड अनलेस यू आर नॉट नोइंग द लैंग्वेज, राइट. सो वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंस इज that we can communicate in other countries too. Then main language for studying any subject globally. Obviously if you are studying, my best wishes are to with all my students, the one who are from motion, the one who are not from motion but will be soon a part of motion. हर किसी के लिए मेरी बेस्ट विशेस यही रहेंगी कि आप बाहर की कंट्री से भी पढ़ें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ जाएं, राइट, एंड अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक हार्वर्ड. आप वहाँ पे क्या नोटिस करते हैं, एवरी बुक द कंटेंट इज रिटन इन इंग्लिश. येस, whatever be the subject be it science, be it SST or any other subject, the content is always in English. So our second point says it, the main language for studying in any subject globally is English. Obviously broadens our minds, develop our emotional skills. हमारे सोच का दायरा भी बढ़ता है. एक नई चीज़ आप सीखेंगे उससे सोच का दायरा बढ़ता है. नॉलेज इज़ ऑलवेज पावर, राइट. आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने आप को पावरफुल फील करेंगे. एंड इंग्लिश इज़ वन ऑफ द पावरफुल टूल्स फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर वेल बीइंग. So it will broaden your mind, develop your emotional skills. The next one is
improves quality of life by providing job opportunities. As I said, कहीं पे भी resume लेके जाएंगे सबसे पहले आपसे यही सवाल किया जाएगा, क्या आपको इंग्लिश आती है, और अगर आती है तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाएंगे. So why to say no? Of course we know the language, and of course we learn the language, and we will communicate with others, better communicate with others with our English language. Then next is used widely in literature and media section. आपने बुक्स देखी हैं. लिटरेचर मीन्स व्हाट? कंटेंट. आपका जो सारा बुक्स है, नॉवेल्स है, व्हाट आर दोज? दोज आर लिटरेचर्स, एंड ऑल दोज लिटरेचर्स आर ऑब्वियसली इन विच लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज. एंड अगेन आर मीडिया सेक्शन, आप न्यूज़ में जाके देखें, कोई सी भी भाषा में आप कोई सी भी न्यूज़ चैनल्स पे देखें, या न्यूज़ का सेक्शन आप उठा के देखें, मीडिया का देखें, एवरीथिंग इज कंसिस्टिंग इंग्लिश इन इट, राइट? So these were some basic and major points for knowing our language English. The next I would like to share with you all is core skills of English language, right? Core skills means what? सबसे पहली हमारी आती है sorry, listening skills. Listening skills helps visualizing and memorizing. आप जब कुछ सुनते हैं, what happens? For example, जब मैं आपसे कहती हूँ apple, an apple, what happens? You start visualizing a red apple in front of you. छोटा सा red apple आप visualize करते हो, and after visualizing it कहीं ना कहीं subconscious mind, subconscious brain में वो picture fit हो जाती है, right? So that's what it is saying. जब आप ज़्यादा सुनने की क्षमता रखेंगे, अच्छा सुनने की क्षमता रखेंगे, आपका visualization और memorizing power बढ़ेगा. The next is speaking skills. Helps to point out mistakes. Obviously आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप गलत कहाँ पे हैं. Being a human being, it is our tendency, we can be wrong sometimes. It's not always that we are always right. So don't feel shy, don't feel that I am making mistakes in saying this language. Doesn't matter. Mistakes makes a man perfect, right? So keep on speaking. आप जितना ज़्यादा बोलेंगे, जितना ज़्यादा इस भाषा को अपने बोलचाल में रखेंगे, आप उतनी जल्दी इसे सीखेंगे. आप मुझे एक बात बताइए, बचपन से आप हिंदी बोलते आए हैं, राइट? वो आपको किसी ने सिखाई क्या घर बैठ के? पहले ही आप बोलना सीख चुके थे हिंदी. क्यों? क्योंकि आप वो सुन रहे थे. किससे सुन रहे थे? आपके सराउंडिंग्स में. यू वर लिसनिंग दैट लैंग्वेज फ्रॉम ऑल ओवर योर सराउंडिंग्स, योर पेरेंट्स, योर ब्रदर्स, योर कजन्स, एवरीबडी वॉज टॉकिंग टू यू इन हिंदी, एंड सो इट वॉज वेरी ईजी फॉर यू टू लर्न हिंदी. आपको बोलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो इनबिल्ट आती ही गई आपके अंदर. दिस इज द सेम वे वी विल बी लर्निंग इंग्लिश. द मोर यू विल स्पीक, द मोर यू विल से, एंड द मोर यू विल लर्न द लैंग्वेज. द नेक्स्ट इज reading skills. Improves concentration and vocabulary. Of course, reading, the basic thing what I say to my students is to read more and more. जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, किताब आप चुनिए. Book is your favorite, not mine. Choose any kind of book, but start reading. At least give some time for reading. With reading, what will happen? It will improve your concentration. आप एकाग्रता के प्रति आगे बढ़ेंगे. आप कंसंट्रेशन से ज़्यादा अच्छे से हर चीज़ को समझ पाएंगे. एंड देन ऑब्वियसली आप जितना रीड करेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में से 100 में से कोई 10 वर्ड्स तो बैठेंगे माइंड में. दैट मीन्स इट विल एनहांस योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी इज योर all the new words, all the old words which is inside your brain, and you are having a bunch of words which you will be using while speaking. Okay, so then next is writing skills. Better presentation on ideas or thoughts. Yes, writing skills. When it comes to writing skills, what incident comes to my mind is that my students for class 10th, yes, there is one more student. Yes, beta, hello. Okay, so my student from class 10th, I gave them to write essays, and obviously it is a writing skill. I came to know how they all are writing, what are their thoughts. So yes, writing skills helps you to make a better communication. It will help you with better presentation on ideas or thoughts. आप जितना बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे, आप अपने thoughts को उतने अच्छे से किसी को present कर सकते हैं लिखित रूप में in form of writing. Okay. So here are some tips. अब इतना सब तो हम जानते हैं शायद कहीं ना कहीं. अब टिप्स क्या हैं? How is it useful to us? अब ये सारा लेक्चर, ये सेशन हम अटेंड तो कर रहे हैं. What is the use of this session? We'll come to it gradually. So coming to this,
tips to improve your English. कैसे improve करें अपनी English? Learn 10 new words daily. All these things I have been telling to my students always. If you want to learn this language, if you want to sorry, if you want to overcome your fear, you have to go through these tips ताकि आप आपकी language को बेहतर कर सके. बेहतर कैसे होगी? First one is learn 10 new words daily. हर दिन कोई नए 10 शब्द पढ़िए. कहीं से भी पढ़ सकते हैं, doesn't matter. Read from dictionaries. You can read from your any of the magazines. Always it can be from TV also. There are some subtitles written in English. जहाँ billboards हो सकते हैं. आप city में घूम रहे हो, city में कहीं पे भी आपको, if you are finding any new sentence in English written over there, just find out some words. At least 10 new words daily. Practice those words. Okay. Then next one is watch English news channel, movies and cartoons. Yes, what do we mean by this? मतलब मैम कह रही है कि यार टीवी देखो, कार्टून देखो. नहीं, मैम ये कह रही है कि जो भी आप देख रहे हैं उसे इंग्लिश में देखने की कोशिश करिए. ऑब्वियसली आपको 24 घंटे हम पढ़ाने के लिए नहीं बैठाते. ऑब्वियसली आप जब घर पे होते हैं, यू आर नॉट ऑलवेज स्टडिंग. देयर इज सम टाइम, योर ओन टाइम. यूटिलाइज दैट ओन टाइम. इफ यू आर वॉचिंग अ टीवी, then kindly watch news channels in English, or kindly watch English movies, kindly watch cartoons in English. What it will do, it will help your English, it will improve your English, your vocabulary. Okay. Very frankly, when I was a student, I used to do the same things. ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, I used to practice it on daily basis, and then I found some changes in me within 2-3 days. I used to do all such things. That's why I am compelling you, kindly do these things so that it will help you to learn English. Next is read English magazines, newspapers and novels. Obviously, again, reading is a very good habit, and I must say this, I have inculcated this habit from my brother. मेरे बड़े भैया हैं जो हमेशा बुक रीडिंग में ही टाइम स्पेंड करते हैं, none other activity apart from reading. So I used to see him, and then I used to say कि जब भैया पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ूं. And there it started. I built that ability to read. I inculcated this reading part in my life, and it is, yes, it is obviously helpful. So kindly start reading. जो भी read करते हो English में read करो. Try to read magazines. Try to read newspapers. If you are not having English newspaper, doesn't matter. मम्मा पापा को परेशान नहीं करना है कि अब English newspaper मंगा दो तो हमें headline पढ़नी है. आप कहीं से भी English पढ़ सकते हैं, बस पढ़िए, ठीक है. Then practice speaking skills 5 minutes daily in front. Sorry, it's a typo error. Front of the mirror. आप आईने के सामने खड़े हो और 5 मिनट अपने आप से ही इंग्लिश में बात करें. अपने आप से तो कोई शर्म नहीं है. दुनिया से आपको अगर शर्म आती भी है तो ये पहला स्टेप रहेगा जहाँ पे यू विल ओवरकम योर फियर ऑफ टॉकिंग इन इंग्लिश. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग फ्यू लाइन्स. इट विल बिल्ड अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू. अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू विल राइज अप, एंड देन यू विल फील द चेंज इन योर सेल्फ. देन start thinking and writing stories in English. Yes, this is a very good tip I can say. आप कहानियाँ बुनना जानते हैं, आपको पता है कहानियाँ कैसे बुनी जाती हैं. बस वो छोटी सी कहानी, नन्ही मुन्नी सी कहानी हो, चाहे फिर आपके zombies की कहानी हो, whatever it is, just think about the story and start writing the story in English. Doesn't matter, grammatical errors, no problem. Formation of sentences are wrong, no problem, but you have to start. आप कहीं से तो start करेंगे, वो start ही तो हमारे लिए सबसे important है. That start will give you a kick start for the rest of your life. So start thinking and writing your stories in English. The next is, and my favorite too, never ever feel shy to speak in English. No one is perfect. See here, never ever, bold में लिखा है मैंने. Why so? I always keep on saying this to my students, that please, please, please never feel shy to speak in English. It's just a language. यहाँ पे
भारी सा टोकरा लेके नहीं घूम रहे हैं हम कि हमें इंग्लिश नहीं आती, हम कैसे सीखेंगे इंग्लिश. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. डोंट टेक इट एज अ बर्डन. आप बर्डन लोगे तो ऑब्वियसली भारी लगेगा. आप उसे लैंग्वेज लेंगे, भाषा लेंगे कि मैंने हिंदी सीख ली बचपन में तो अब मैं इंग्लिश सीख लूँगा. डजेंट मैटर. सो नेवर एवर फील शाय. नेवर एवर फील कि अब मुझे नहीं आता, मैं कैसे बात करूँ. जस्ट स्पीक अप योर माइंड. एंड one more thing, no one is perfect. Even I'm not perfect. Nobody in this world is perfect. You know that. So apply this while practicing your English. The next is, what is advanced English? अब हम जब English की बात कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हमने English के बारे में बात तो कर ली. अब हम इसे क्या समझते हैं? Why English is important? Obviously we have learned those points, the globalization and all that. It is a business language of present corporate world. Yes, of course it is. When you'll go outside, almost 400 million people are speaking in English, right? And it is a corporate language now. Why? Because globalization चल रहा है. Everybody all across from the borders, there are multinational companies. In fact, in India itself we are having MNCs, right? So it is a very basic need for today's world that you are actually trying to speak in English. You are trying to communicate with people over there sitting at other corners. So it's your basic need today, because that will obviously give you more and more job opportunities, right? So अब हम आते हैं इस पे एडवांस इंग्लिश पे. व्हाट इज़ एडवांस इंग्लिश? व्हाट डू वी मीन बाय एडवांस इंग्लिश? यार कुछ नहीं, इंग्लिश का थोड़ा सा बेहतर वर्जन, राइट? इट इज़ एन एडवांस इंग्लिश. यस यस नेहा, हेलो टू यू. ओके, किससे बोलना नहीं आता? डजेंट मैटर. आपको बोलना नहीं आता है तो आप आइए मोशन हमारे पास, हम बोलना सिखाएंगे आपको और आपके बाकी दोस्तों को जिन्हें बोलना नहीं आता है. So here we are, that's why we are here, right? So now coming to what is advanced English. It is also known as superpower language. It skills to strengthen the speaking and listening abilities of the student. Obviously English आ गई मतलब एडवांस इंग्लिश हमें आ ही जाएगी. डजेंट मैटर. पहला पड़ाव है इंग्लिश सीखना, राइट? आपको इंग्लिश आ गई, इफ़ यू आर थरो विद द इंग्लिश नॉलेज, देन एडवांस इंग्लिश आपसे दूर नहीं है. एडवांस इंग्लिश इज नथिंग. इट विल जस्ट स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी, योर कॉन्फिडेंस बाय strengthen the speaking and listening abilities. आप जो सुनते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उसमें से आप कितना ग्रास्प कर सकते हैं इंग्लिश में, दैट इज़ एडवांस इंग्लिश. इट विल हेल्प यू टू ग्रास्प मोर एंड मोर. इट विल स्ट्रेंथन योर वोकैबुलरी, योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, योर सेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग एनी पैसेज, एनी ऑफ द स्टोरी गिवन टू यू, राइट? सो दिस इज अ प्लस वाला फॉर्म ऑफ इंग्लिश. Now there are certain examples I've given over here. We'll discuss this. Normal English, ये normal English, ये advanced English, ठीक है? So what is happening? Normal English, I'm very happy. But if I'm saying in advanced English, how will I say? I'm over the moon. See, difference समझ में आ रहा है? मतलब दोनों का एक है, दोनों में ही मैं happy हूँ. लेकिन जब मैं normal English बोल रही हूँ तब मैं कह रही हूँ I'm happy. लेकिन जब मैं एडवांस इंग्लिश में बात करूंगी तो मैं क्या कहूँगी? आई एम ओवर द मून, राइट? नेक्स्ट इज आई विजिट माई होम टाउन वेरी रेयरली. वेरी रेयरली आई विजिट माई होम टाउन वेरी रेयरली. बहुत कम मैं अपने गांव शहर जाता हूँ. नाउ एडवांस इंग्लिश में से कैसे कह रहे हैं हम? आई विजिट माई होम टाउन वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? होम टाउन वेरी रेयरली. वेरी रेयरली को क्या रिप्लेस कर रहा है? वंस इन अ ब्लू मून. कैन यू सी द डिफरेंस? येस, नॉर्मल इंग्लिश सिंपल सी लगती है सुनने में, एडवांस इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर लगती है सुनने में. सॉरी आई फेल asleep. सॉरी आई nodded off. आई एम फिट एंड हेल्दी. ऑब्वियसली कोई पूछता है हाउ आर यू? आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम फाइन, यही जवाब देते हैं हम. बट एडवांस इंग्लिश में हम इसे कैसे कहेंगे? I am fit as a fiddle. The next is, it is very cold outside. I'll say, rather than cold, I'll say I am freezing outside. Freezing, obviously we know the meaning of freezing. That's why we are using it in advanced English. The next is,
These are same similar kind of sentences you are having over here for normal English. This is keep it a secret. Advance में क्या कहेंगे इसे? Keep it under wraps. अब wraps क्यों कह रहे हैं? Connection समझते हैं इसका हम. When we are talking about a secret, secret मतलब जो किसी से हमें बताना नहीं है, हमें छुपाना है, अपने तक रखना है, तो how we are saying keep it a secret. किसी को बताना मत. Keep it a secret, right? But when I'm saying it in advanced English, I'm saying just keep it in wraps. Wraps मतलब परतों के अंदर रखना, है ना? तो कहीं ना कहीं connection है. Yes, there is always a connection, but this one is a advanced form of English. I like you a lot. I'm so into you. The way of saying is I'm so into you. And similarly are these other examples. One of mine favorite is this one. It's not so difficult. We are always using this word. It's very difficult. I cannot do that. The problem was so difficult. Oh my God. But this is the word we are replacing with rocket science. It is not so difficult. It is not a rocket science. Rocket science क्यों कह रहे हैं? क्योंकि rocket science tough रहती है. Obviously nobody is able to do like that. आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, rigorous उसके लिए पढ़ाई करी जाएगी, and then you'll become a scientist, and then ये वाला चैप्टर आ जाता है रॉकेट साइंस का. उसके पहले तो किसी को नहीं बनता. तो दैट इज़ वाई डिफ़िकल्ट एंड रॉकेट साइंस. सो इन नॉर्मल इंग्लिश इट इज़ not so difficult, but in advanced we are saying it's not a rocket science. Chalna yaar, it's not a rocket science. You can do that. We can say like that. Okay. Okay, I'm going to get married tomorrow. I'm going to tie a knot tomorrow. Marriage, tie a knot, गठबंधन होता है उसमें, इसीलिए tie a knot in advanced English. I'm going to get married tomorrow. In advanced we are saying I'm going to tie a knot tomorrow. ठीक है, समझ में आ गया डिफरेंस. अब एडवांस जाने से पहले ज़रूरी है कि हमें नॉर्मल इंग्लिश आनी चाहिए, और नॉर्मल इंग्लिश के लिए हमने ये सब जो डिस्कशन में लिया है इसे आप अप्लाई करें. Don't think that I cannot do this. It is for CBSE students. It is for those students who have been talking in English throughout their lives and all that. Nothing is impossible, as again it is not a rocket science. You can do that very well. Okay. Now, according to me, what I feel, you are at some kind of level of speaking in advanced form of English. How we can say that? साइंस आप नोटिस करें आपके अंदर क्या है जिससे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एडवांस इंग्लिश के कगार पे हैं या एडवांस इंग्लिश के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं. फर्स्ट वन इज़ यू कैन अंडरस्टैंड मोस्ट ऑफ व्हाट यू कैन हियर. ठीक है, मोस्ट यू कैन हियर मीन्स जितना भी कुछ आप सुन रहे हैं इंग्लिश में, चाहे वो आप मीडिया पे सुन रहे हैं, चाहे आप वो किसी से वर्बली सुन रहे हैं, या फिर आपको कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में मिलती है. If most of the things are that able that you can understand those words, you can make out what the meaning is, that means you are very near to advanced English. The second is your pronunciation is good. Yes, my dear students, it's pronunciation. Again, हमने grammar में पढ़ा है pronunciation बोलते हैं बहुत सारे लोग. Again, there is a mistake over here. But it is said pronunciation, not pronunciation. So your pronunciation is good. If you are speaking well, if your pronunciation है. अच्छा, pronunciation की बात आती है तो एक बेसिक सी सब्ज़ी के बारे में बात करते हैं. आपके घर में होगी रेड सी, क्या कहते हैं? टमाटर. अब टमाटर को आप क्या कहते हैं? टोमेटो. No, it's not tomato, it's tomatoes. How it is pronounced? It is tomatoes, and similarly goes with potatoes, tomatoes and potatoes. So pronunciation makes a very big difference. Your pronunciation should be clear and correct. The third one is you can write down your thoughts well. Of course, अगर आप कुछ सोच रहे हैं, अगर आपने उसे लिख लिया इंग्लिश में, थोड़ा बहुत इधर उधर है, it's okay. But if you can write it in a good manner, that means you are almost there. ठीक है. Fourth one, you can speak on different subjects. Yes, subjects means
हिंदी इंग्लिश की बात नहीं हो रही है। सब्जेक्ट मीन्स आपको जो भी दे दिया गया टॉपिक, चाहे अब वो ग्लोबलाइजेशन हो, whether it's atmosphere, whether it's saving the trees, whether it's save the soil, whatever the subject, the matter is given to you, if you are speaking on that very fluently, or if you are speaking on that particular subject, the things you know about it, that means you are almost there. आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है आगे जाने के लिए. Then your vocabulary is wide. Vocabulary is wide का क्या मतलब हुआ? Vocabulary means, again I have already told you, vocabulary means when you are knowing a lot of words which are having different meanings, where you are using those words in your daily speaking language. Okay, for example, जब आपको दया आती है, आप क्या कहते हैं? I am feeling very pity, but I'll replace it, my heart is very compassionate. Compassionate क्यों? किसी के ऊपर दया आना, किसी गरीब को देख के आपको दया आती है, तो आपने कोई नॉर्मल वर्ड यूज़ नहीं करके क्या यूज़ किया? कंपैशनेट. ठीक है. सो दीज आर काइंड्स ऑफ वर्ड्स विच वी एक्चुअली वांट फॉर आवर वोकैबुलरी. अबंडेंट एंड एम्बियंस एंड एम्बियंट एंड ऑल सच वर्ड्स विच वी विल through which we will enhance our vocabulary. Okay, so अगर हमारी vocabulary already wide है, काफ़ी सारे words हम जानते हैं, that means बस नज़दीक है हमारी मंजिल. Then you aren't embarrassed by your English. Again, sixth one, but the most important one, आप embarrassed feel नहीं करते जब बात करने में. That means you are almost there. Advanced English के आप बहुत करीब हैं. आपको embarrassment नहीं feel होनी चाहिए आपकी English पे. कुछ words गलत है, prepositions गलत डाल दिए, doesn't matter. किसी को भी perfect नहीं आता. आप ऐसा सोचिए, आज आप किसी सिटी में हैं, सिटी इन अमेरिका, ठीक है, वहाँ पे कोई इंग्लिश में बात करता है तो आपको कैसा लगता है सुनने में? ओह माय गॉड, ही इज स्पीकिंग सच अ नाइसली लैंग्वेज, ओह माय गॉड, मैं काश इसकी जैसा बोल सकता, राइट? ऐसे कुछ थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में. लेकिन आपको क्या पता कि वो भी सही इंग्लिश कह रहा है कि नहीं. जस्ट बिकॉज ही इज़ अ ब्रिटिशर एंड हिज लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, दैट्स वाई इट इज़ गुड. अच्छा लग रहा है सुनने में, भले फिर उसके अंदर कितनी भी ग्रामेटिकल एरर्स होंगी, नोबडी इज़ माइंडिंग दैट. सिमिलरली थिंक दैट वे. आज आप हिंदी में बात कर रहे हैं, वही ब्रिटिश अगर आपको देख रहा होगा तो क्या कहेगा? वाह, क्या हिंदी बात करता है, राइट? तो ये चीज़ हमें इंग्लिश के साथ भी अप्लाई करनी है. वी हैव टू स्पीक गुड इंग्लिश, वी हैव टू ट्राई टू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश, ताकि हम एडवांस लेवल पे भी जा सके. उसके लिए क्या ज़रूरी है? हमें शाय फील नहीं करना है, एंड दूसरा हमें एम्बैरस नहीं होना है किसी के भी सामने. सो these were some tips for learning English, normal English, basic English and advanced also. What we are doing in motion over here is we are conducting our workshops also. आप pictures में देख सकते होंगे, this is our classroom, this is our workshop. We are actually having English workshop where we are giving some kind of activities to our students. We are giving some objects on which they are instantly speaking in English, right? The second picture is from the same workshop. So we want all of our students and other students, all the persons who are watching us right now, it's a pleasure to have you on our YouTube's live session for English. What we want at Motion is कि हमारा बच्चा हर तरफ से डेवलप हो. सिर्फ साइंस, SST, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, I know these are quite bit tough, but English is also important, and we at Motion are focusing on that also. We want an overall development for our students. सिर्फ एक सेक्टर में ही हमें अपने स्टूडेंट्स को आगे नहीं रखना है. हम चाहते हैं कि मोशन का जो स्टूडेंट हो वो जहाँ पे भी जाए वो ऑलराउंडर बन के उभरे. दैट मीन्स अपने हर सब्जेक्ट में वो A1 तो रहे ही रहे, इंग्लिश में भी वो पीछे नहीं रह जाए. सो दैट इज़ वाई our main motive for the workshops is that we want our students to be at top, be a part of any subject, be it for English, anything. हर चीज़ में मोशनाइट आगे ही रहेगा और आगे रहेगा ही, because we are focusing on every aspect of our students, every subject. अब आप ये सोचें, यस,
अब अगर हम बात करते हैं अपने वर्कशॉप्स की, हाउ आर वी कंडक्टिंग इंग्लिश वर्कशॉप्स, वाई इज मोशन कंडक्टिंग इंग्लिश वर्कशॉप्स? yes, we are conducting these workshops to make our students better in way of speaking. We have found that there are certain students who know English very well, but they are very hesitant. Okay, they don't feel like speaking up, they are not actually giving up the answers, be it they know the answer, still they are not sorry still they are not representing themselves, still they are not taking part, just because they are lacking self confidence. तो हम वो self confidence भी develop कराएंगे आपका. yes, so motion is there to help you out in each and every manner, your studies, your overall grooming. We are having this mentorship program too, so that we can specifically point out those students which are weak at certain aspects, and we are working on them. अब ये सारी बातें तो अपनी जगह हो गई, इंग्लिश अपनी जगह हो गई. आई होप आप इन सब चीज़ों से समझे होंगे कि हमें इंग्लिश को कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ आएगा फ्यूचर में. एंड आई नो दैट यू विल ऑलवेज स्पीक, यू विल ऑलवेज ट्राई टू स्पीक अ बेटर लैंग्वेज. यस, अब उसके अलावा हम जो बात करना चाहते हैं आपसे, इट इज़ अ सिंपल स्टोरी. आई वुड लाइक टू शेयर दिस शॉर्ट एंड सिंपल स्टोरी. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पूसलार. पूसलार वॉज अ मिस्टिक. मिस्टिक समझते हैं आप? मिस्टिक एक होता है दूरदर्शी, सेंट टाइप का जो इंसान हो जिसके पास दूरदर्शिता होती है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन नोन एज मिस्टिक. दिस पूसलार वॉज अ मिस्टिक. ही वॉज अ विलेजर, अ पुअर विलेजर who used to have this alms from people, and the food he used to survive on that only, because he was very poor and he was totally devoted to Shiva. Shiva means our Mahadev, the Lord Shiva. So पूसलार कौन थे? वो एक महादेव भक्त थे जो सिर्फ भक्ति के अलावा कुछ नहीं जानते थे. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ अ शिवा एंड दैट्स इट. उसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, ना उन्हें कुछ किसी चीज़ की आशा थी. देन द सेम एरा देयर वॉज अ किंग, and king was having a big dynasty. Then this king thought ki I am a big devotee of Shiva too, why shouldn't I make a big temple for Shiva? एक बड़ा सा मंदिर बनाया जाता है शिव के लिए. कैसे बनाया? उन्होंने अपनी लेबर लगा दी, उन्होंने सारा मटेरियल लगा दिया विथ एवरी पॉसिबल जेम स्टोन, एवरी डायमंड, गोल्ड एंड वॉट एवर ही वॉज फाइंडिंग ओवर देयर. He was placing all those things for his temple to make it more and more beautiful, so that everybody would say ki wow, what a beautiful temple of Shiva the king has made. Okay, so these were the two people of the story. The incident is about Puslar and the king. Now before this ceremony, opening ceremony होती है हर चीज़ की, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है मंदिरों की. उसी तरह उस मंदिर की भी प्राण प्रतिष्ठा का दिन नज़दीक आया. द कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी केम नियरर, बट बिफोर दैट द किंग वॉज स्लीपिंग वन डे एंड इन हिज ड्रीम अपीयर्ड शिवा. शिवा केम इन हिज ड्रीम एंड सेड, sorry my dear king, I won't be able to attend your consecration ceremony because I have to go that same particular day to Puslar's temple. अब पूसलास का टेम्पल तो किंग को पता ही नहीं था. What happened? The king wake up with a jerk. He said, oh, what a dream it was. Shiva came into my dream and just said what? That he'll be visiting Puslar's temple. The very next day king moved out of his palace and found who? Puslar. उसने कोशिश की, ढूंढा कि कौन है पूसलार जिसके बारे में शिवा मुझे खुद सपने में कह के गए. Now when he arrived near Puslar, what he found? Puslar was a saint, kind of a saint. He was sitting, his eyes were closed, he was meditating. He was actually a devotee of Shiva, so obviously he was meditating over that time. And the king came. What happened? The king came. King asked Puslar, I want to see the temple. Where is the temple which you are making, which you have already made for Shiva? Shiva is not ready to come to my temple. He is saying, today is the day when I will be going to attend Puslar's temple's consecration ceremony. So I want to see the temple जहाँ खुद शिवा चल के आए हैं, तो मैं भी उसी टेम्पल में जाना चाहता हूँ. ये चीज़ें एक राजा ने किससे कही? पूसलार से कही, सेंट से कही. And Puslar suddenly felt embarrassed, and he out of embarrassment said, Maharaj, the king, almighty,
There is no such temple made out of stones, made out of gems or anything like that. The temple is in my mind. I am a devotee of Shiva, and each day I used to build a beautiful temple inside my mind, and I wanted my Lord to visit my temple for the very first time, to inaugurate my temple of mind. अब इस इंसिडेंट को आप ऐसे समझें कि पूसलार के उस मंदिर के लिए अगर शिवा किंग का टेम्पल छोड़ के आए, किसके पास गए? पूसलार के टेम्पल के पास, जो कि उसने माइंड में ही बनाया हुआ था, असल में वो टेम्पल था ही नहीं। तो अब आप समझते हैं कि आपकी सोच की शक्ति क्या कर सकती है, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी खुद की सोच। गिव अ थॉट, गिव योर सेल्फ अ मिनट एंड चूज़ योर ट्रैक, choose your track and then give all of your energy towards that track. आपको वो ज़रूर हासिल होगी। जब आप अपनी सारी एनर्जी, सारी डिटर्मिनेशन देंगे, तो जब भगवान चल के आ सकते हैं तो आपके पास तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी मंजिलें हैं जिन्हें पार करना है। आई एम श्योर यू कैन डू दैट। सो जस्ट focus on what you want to do, focus on your learnings, focus on your languages, focus on your subjects, and welcome to motion. Be a part of motion. We are always there to help you. Any problem, motion is there. Any problem, your teachers are there to help you out. So for now I am taking bye bye and see you next soon. Till then, take care.